Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Madhava Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Gide Varadari Gopi Jana Vallabha Gide Varadari Yashoda Nandana Braja Janardana Yashoda Nandana Braja Janardana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasari Bhakta Veda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Jai Om Vishnupada Paramanta Paripāja Acharya Ashtottara Srimad Abhaya Charan Aravinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Shri Prabhupada ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Jai Gaur Premanandi. Glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees. Glory to Shri Guru Shri Maharaj. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So reading from Srimad Bhagavatam. Is the verse written up here? No. Oh. 20, what's it written? 26. 26? Yeah. Chapter 26. 26, okay. So first, I will read verse 25, which has no purport, and then we will repeat verse 26. Evam banam tavashistam paktva karjuna jambuvat. Go gopalahe biturantum sabala pravishadari. Translation. When the Vrindavan forest had thus become resplendent, filled with ripe dates and jumbo fruits, Lord Krishna, surrounded by his cows and cowherd boyfriends and accompanied by Sri Balaram, entered that forest to enjoy. Hare Krishna, श्लोकम 25 का अनुवाद। जब वृंदावन का जंगल पके खजूरों तथा जामुन के फलों से लदकर इस प्रकार शोभायमान था,
तो भगवान श्री कृष्ण अपने गौ तथा ग्वाल बालों से गिरकर एवं श्री बलराम के साथ उस वन में आनंद मनाने के लिए प्रविष्ट हुई। So now we will repeat the verse 26. Denavo mandagaminya Udho bharena bhuyasa Yayur bhagavata huta Trutam pratyasnutastanaha Dhenavo mandagaminya Udho bharena bhuyasa Yayur bhagavata huta Dhruvam pritya snutastana Denavo mandagaminya Udho bharena bhuyasa Yayur bhagavata huta Dhruvam pritya snutastanaha Denavo mandagaminya Udho bharena bhuyasa Udho bharena bhuyasa Denavo mandagaminya Udho bharena bhuyasa Yayur bhagavata huta Tutam pritya smutastana Vaishnavi Denavo mandagaminya Udho bharena bhuyasa Yayur bhagavata huta Yutam pritya smutastana Denavo mandagaminya Udho bharena bhuyasa Denava मंदगामिन्या मंदगति से चलने वाली हाथ से भूयसा भगवता शीघ्र So since it's a short verse of purport, I'll read the English also, and then you can translate. Translation. The cows had to move slowly because of their weighty milk bags, but they quickly ran to the Supreme Personality of Godhead as soon as He called them, their affection for Him causing their udders to become wet. गौओं को अपने दूध से भरे तनों के भार के कारण मंदगति से चलना पड़ा, किंतु जो भी भगवान ने उन्हें बुलाया वे तुरंत दौड़ पड़ी और उनके प्रति स्नेह के कारण उनके स्तन गीले हो गए। Purport. Srila Prabhupada comments, the cows being fed new grasses became very healthy and their milk bags were all very full. When Lord Krishna called them by name, they immediately came to Him out of affection, and in their joyful condition, milk flowed from their milk bags.
तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की टीका है, गौएं नई घास चरकर काफी पुष्ट हो गई थी और उनके थन दूध से भर गए। जब भगवान कृष्ण ने नाम ले लेकर उन्हें पुकारा तो वे स्नेहवश तुरंत उनके पास आ गए और उनकी इस हर्षावस्था में उनके थनों से दूध बहने लगा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य करञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। विचैतन्यमनोभीष्टां स्थापितां येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So this chapter is full of metaphors and similes. तो ये जो है अध्याय उसमें बहुत सारे रूपक और दृष्टांत दिए गए हैं। But starting with verse 25 until 32, it speaks about how Krishna takes advantage of the rainy season. तो यहाँ पर है 25 से 30 श्लोक में हम देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण है वर्षा ऋतु का किस प्रकार से लाभ उठाते हैं। The cows, as it says here, their bags were full of milk. तो यहाँ पर विशेष रूप से बताया है कि गाय के जो थने हैं वो दूध से भरे थे। This is because of two reasons. तो उसके कारण है। The external reason is because in the rainy season there's more grass. तो एक बाह्य कारण है कि वर्षा ऋतु के कारण बहुत सारा हरा घास वहाँ पर उपस्थित था। In the dry season, the cows may become a little thin, because very little grass. ऋतु में है गाय भी है वो पतली हो जाती है थोड़ी। But in the rainy season, they can eat to their heart's content, and therefore there's so much opulence. तो वर्षा ऋतु में वो पेट भर खा सकती है और इसलिए बहुत सारे ऐश्वर्य रहते हैं। So here it says Manda Gaminya, that the cows, as we see, generally they move very slowly. तो आपने देखा ही होगा कि गाय सामान्य रूप से धीरे-धीरे चलती हैं। But Drutam, they started to move very quickly because Krishna was calling them. पर यहाँ वो जल्दी से भागने लगी क्योंकि भगवान कृष्ण उन्हें बुला रहे थे। So, in the same way, just as there are many similes here, we can also compare this to our situation. तो इस प्रकार का जो दृष्टांत है उसको हम अपने जो स्थिति है उसके साथ भी उसकी तुलना कर सकते हैं। If we take Krishna Prasadam, Mahaprasadam, तो अगर हम कृष्ण प्रसाद लेते हैं तो and if we nurture our very existence by chanting the holy name with faith and devotion, तो हम श्रद्धा और भक्ति के साथ है भगवान का नाम है लेते हैं तो हमारा अस्तित्व then our consciousness becomes very well fed. तो हमारी चेतना है वो बहुत ही पुष्ट हो जाएगी And we can come very quickly to Krishna. और हम जल्दी से भगवान कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। But if we're not feeding ourselves by Shravanam and Kirtanam, और वो हम अपने आप को श्रवण और कीर्तन के द्वारा पोषण नहीं करते हैं तो then also Manda Sumanda Matayo, तो तब है हमारा मंद सुमंद मतया we become spiritually lazy, तो हम आध्यात्मिक रूप से आलसी बन जाएंगे, especially in Kali Yuga. फिर खास करके कलयुग में। Many of the similes given in previous verses, they speak about how Kali Yuga makes other scriptures prominent and the Vedas
are overshadowed. यहाँ पर और भी बहुत सारे रूप दिए गए हैं जिस पर बताया गया है कि कलयुग में है जो दूसरे ग्रंथ है वो ज़्यादा प्रमुख बन जाते हैं और वेद जो है वो प्रच्छन्न यानी कि गौण हो जाते हैं. And even those who study the Vedas, their understanding is overshadowed by independence. और जो वेदों का अध्ययन भी करते हैं तो उनका अध्ययन जो है वो स्वतंत्र होता है. In the very beginning of the Bhagavatam, it says that Krishna is Swarat. He is the supremely independent person. तो भागवतम की शुरुआत में बताया कि भगवान स्वराट है, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है. And a devotee becomes independent by being dependent. No? और भक्त है वो भी मुक्त हो सकता है, स्वतंत्र हो सकता है, भगवान के पर निर्भर रहकर. And people who think they're independent, they become dependent on the three modes of nature. No? और जो लोग विचार करते हैं कि वो कोई स्वतंत्र हो गए हैं, वो प्रकृति के गुणों के ऊपर निर्भर रहते हैं. The three modes of nature, as Srila Prabhupada said so many times, are very strict, very rigid. No? और तीन गुण हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि बहुत ही कठोर हैं. You can't escape. आप उससे बच नहीं सकते हैं. One time Srila Prabhupada said that Durga, she has a trident. No? तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि दुर्गा देवी के पास एक त्रिशूल है. Has three blades. No? तो उसमें तीन शूल होते हैं. And these represent the three miseries of material existence. तो वो तीन प्रकार के जो दुख है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं. They keep the living entity subdued. No? तो हमेशा जीव को वश में रखता है. Prabhupada said, even if you manage to escape this trident, no? और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर तुम इस तीन शूल से बच भी जाओगे तो Durga has 9 more weapons. No? तो दुर्गा देवी के पास 9 और शस्त्र हैं. So you can't escape. No? तो आप बच नहीं सकते. Mami vaye prapadyante mayamitam taranti te. But if we surrender to Krishna, then we can, Maya will allow us to escape. तो अगर हम भगवान की शरणागति लेते हैं तो माया हमें बचने का अवसर देगी. Actually, Maya wants us to escape. माया तो चाहती है कि हम बच जाएं. She doesn't want to control us. वो चाहती नहीं कि वो हमारा नियंत्रण करें. Even after Krishna finished his pastimes, Maya approached him. और भगवान ने जब अपने लीलाओं को पूरा किया तब माया है उनके पास गई. And she said, "My dear Lord, all your devotees, they're massaging you, they're fanning you, they're playing with you. I've seen this in your pastime." तो मैंने देखा है कि आपकी लीलाओं में आपके अलग भक्त है, आपको हवा देते हैं, आपके चरणों की सेवा करते हैं, अलग प्रकार से आपकी सेवा करते हैं. But I have to treat everyone very badly. पर मुझे तो सबको I want to. Can't you allow me to also have these very pleasurable pastimes? तो क्या मुझे भी आपके सुखमय लीलाओं में भाग लेने का अवसर मिल सकता है? And Krishna said, "Your service is very valuable." तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारी सेवा बहुत ही मूल्यवान है. Because you keep the rascals from approaching me. तो तुम है बदमाशों को दूर रखती हो मेरे से. No, I can only be my personal association. I can only give to my devotees. तो मैं अपना निजी संग है अपने भक्तों को ही दे सकता हूँ. Just like in the 5th canto, it says that that the Supreme Lord can give liberation very easily. तो 5वें स्कंद में जैसे बताया गया है कि भगवान है मुक्ति आसानी से दे सकते हैं. But to give bhakti, it's not. He doesn't give so easily. परंतु भक्ति वो आसानी से हमें प्रदान नहीं करते हैं. Because Praya is so jita jito jitap yasi traisti lokyam. Because even though Krishna is unconquerable in the 3 worlds, he is conquered by the love of his devotees. And if he allows an unqualified person to enter into the realm of bhakti, then he has to be subordinate to them. और अगर कोई अयोग्य भक्त है भक्ति के जगत में प्रवेश कर लेता है तो क्योंकि भगवान है भक्तों के वश में होते हैं. Of course, in one sense, Krishna is subordinate. He accepts being subordinate to all the living entities by giving them everything they need.
तो भगवान एक प्रकार से सब जीवों के वश में है, जो भी जीव चाहते हैं वो कृष्ण देते हैं। He speaks Bhagavad Gita. वो भगवद गीता बोलते हैं। He performs wonderful pastimes to attract the living entities. और सब जीवों को आकर्षित करने के लिए वो अनेक लीलाएं करते हैं। He expands himself as Vishnu to bless all the living entities who worship him with awe and reverence. और जो भी भक्त ऐश्वर्य के साथ भगवान विष्णु की सेवा करते हैं उनको भी वो आशीर्वाद देते हैं। And he even comes as Sri Chaitanya Mahaprabhu to save the most fallen. और वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर सबसे पतित लोगों का भी उद्धार करते हैं। So he's really his mission is to bring the living entities back home, back to Godhead. तो उनका उद्देश्य ये है कि जीवों को वापस भगवत धाम में ले जाना। But in his form as Braja Krishna, he can never leave Vrindavan. तो वृंदावन के कृष्ण के रूप में वो कभी भी वृंदावन को छोड़कर नहीं जाते हैं। And therefore, to be able to understand Vrindavan Krishna, we have to become qualified. इसलिए वृंदावन कृष्ण को समझने के लिए हमें योग्यता प्राप्त करनी होगी। How will we become qualified? हम कैसे योग्य बनेंगे? We have to be very serious in our spiritual life. तो हमें अपने आध्यात्मिक जीवन को बहुत ही गंभीर बनना होगा। Just like in the Bhagavatam, 11th canto, 4th chapter, text number 11, it says that sometimes the demigods give so many obstacles to the devotees. तो 11वें संग में जैसे बताया है कि देवता है भक्तों को काफी सारे अवरोध प्रदान करते हैं। Because the devotees bypass them. No. क्योंकि भक्त है उस अवरोधों को पार कर जाते हैं। But the people who worship the demigods and follow the Vedic system of worship, they give them benefits. और जो देवता है वो धर्म के अनुसार है देवताओं की पूजा करते हैं उनको देवता लाभ प्रदान करते हैं। So why are they giving? They're giving benefits to materialists and they're giving problems to the devotees. तो क्यों देवता है वो की परी व्यक्ति को जो उनकी पूजा करते हैं उनको लाभ प्रदान करते हैं और भक्तों को कष्ट देते हैं। They give problems to the devotees for two reasons. तो भक्तों को कष्ट देने का एक ही दो कारण है। One is because the devotees do not pay their taxes to the demigods. क्योंकि जो भक्त है वो देवताओं को उनका कर नहीं देते हैं। Of course, some devotees, especially in India, they have the remnants of Devata worship. You know. तो हम देख सकते हैं कि भारत में कई भक्त हैं वो अभी भी देवताओं की पूजा करते हैं। They'll still have Ganesh and Lakshmi and few on their altar along with Gornitai. But there's no need for that. No. And if you're still attached to the devatas, then you may find some obstacles in your devotional service. तो अभी भी आप देवताओं से आसक्त है तो आपको अनुभव होगा कि आपकी भक्ति में कुछ न कुछ रुकावटें आ रही हैं। So the demigods become a little envious that the devotees are bypassing them. तो इसलिए देवताओं को बड़ी ईर्ष्या होती है कि भगवान के जो भक्त हैं वो उनका अनुसरण नहीं करते हैं। Even Mukti Devi, she becomes distraught in Kali Yuga. तो मुक्ति देवी भी है वो भी कलियुग में बहुत दुखी हो जाती हैं। Because Sri Sanatana Goswami has written one very beautiful verse in first chapter of his Brihat Bhagavatamrita. I think it's text number 8. And सनातन गोस्वामी बृहद भागवतम में शुरुआत में 8वें श्लोक में बताया गया है। I can't remember the whole verse right now, but it basically says that Bhakti Devi is offering her lotus feet to the devotees. तो भक्ति देवी है अपने चरणों को प्रदान करते हैं भक्तों को। This is by the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. और ये चैतन्य महाप्रभु के कारण ही संभव हुआ। And therefore, Mukti, liberation personified, is taking shelter of the lotus feet of Bhakti Devi. तो जो मुक्ति है
देवता को भक्ति देवी का आश्रय लेते हैं। because Vaishnavas tejamana, because the Vaishnavas have rejected her. क्योंकि जो भक्तों ने मुक्ति का त्याग कर दिया है। Previously, the brahmacharis would approach her through japa. तो पहले ब्रह्मचारी जप के द्वारा उनका आश्रय लेते थे। The grihastas through yagya. और गृहस्थ यज्ञों के द्वारा उनका आश्रय लेते थे। The vanapastas through tapasya. और वानप्रस्थ तपस्या के द्वारा उनका आश्रय लेते थे। And the sannyasis through renunciation. और जो सन्यासी है वैराग्य के द्वारा उनका आश्रय लेते थे। And she would bless them. और उस प्रकार से मुक्ति देवी ने उनको आशीर्वाद देती थी। But now those blessings are not available पर आज वो आशीर्वाद उपलब्ध नहीं है। because she has taken shelter of Bhakti Devi. क्योंकि मुक्ति देवी ने अभी भक्ति देवी का आश्रय लिया है। Because the Vaishnavas won't give her shelter. क्योंकि वैष्णव है वो उसको आश्रय नहीं देते हैं। They're not interested in liberation. No. क्योंकि भक्त है तो उनको मुक्ति का कोई इच्छा नहीं है। And therefore, people who do all these austerities and mechanical japa, and they can never achieve liberation because in Kali Yuga she will not give it so easily. तो जो लोग हैं यांत्रिक जप करते हैं और तपस्या करते हैं उनको मुक्ति प्राप्त करना कठिन है। Now there may be one or two, real yogis or real jnanis, and she may give them some shelter. तो हो सकता है कि इस कलयुग में एक तो कोई सही योगी या ज्ञानी हो कि जिनको मुक्ति का आश्रय मिले और वो मुक्ति प्राप्त करे। But by taking shelter of Chaitanya Mahaprabhu and taking shelter of Bhakti Devi, she's not so inclined to do so. क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का आश्रय और भक्ति देवी का आश्रय लेने के बाद है मुक्ति देवी को और ज्यादा कोई इच्छा नहीं है। She's feeling so much happiness being in touch with Bhakti. तो मुक्ति को भक्ति देवी के संग से बहुत ही सुख का अनुभव होता है। And Sanatana Goswami says she only looks at the lotus feet of Bhakti Devi. और इसलिए मुक्ति देवी हमेशा भक्ति देवी के चरणों का ही ध्यान करती हैं। She's not qualified to look at her lotus face. वो योग्य नहीं है कि वो भक्ति देवी के मुख को देख सके। And this indicates that even if one's bhakti is incomplete, otherwise you're not fully absorbed in bhakti, but it's so powerful that it will bring you to the lotus feet of Krishna. तो अगर कोई किसी की भक्ति पूर्ण नहीं है, अगर वो परिपक्व नहीं हो गया है, तो भी उस भक्ति के प्रभाव से वो भगवान के चरणों का आश्रय प्राप्त करेगा। So, but Kali Yuga does its best to deviate us from this. So the demigods are giving obstacles, but for the devotees, these obstacles are like a ladder. तो देवता है भक्तों को है अलग अवरोध प्रदान करते हैं, पर भक्तों के लिए वो एक सीढ़ी का काम करता है। Like a stairway. जैसे एक सोपान होता है। And every obstacle is like a step going toward Krishna. तो हर प्रकार का अवरोध है, वो सोपान का एक कदम है जो हमें कृष्ण की ओर ले जाता है। And so therefore Krishna, and another reason why the demigods, especially Indra, doesn't want to, give some problems to devotees, because he thinks that if a devotee does too many austerities or penances, he may take his position. तो देवता है, विशेष रूप से इंद्र है, भक्तों को बहुत सारे अवरोध प्रदान करते हैं, क्योंकि उनके मन में चिंता होती है कि भक्त बहुत सारे तपस्या करेंगे, वैराग्य होगा, तो वो मेरी जो आसन है उसको ले लेंगे। Because that's how you get positions in the material world, by austerities. क्योंकि भौतिक संसार में तो तब करके ही आप एक जो दूसरी स्थिति है वो प्राप्त कर सकते हैं। You get material benefits by austerity. आप कोई भी तप करके है भौतिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। But devotees, it's just the opposite. तो भक्तों के लिए ये विपरीत है। They get austerities by devotional service. तो भक्तों के लिए तपस्या भक्ति ही है। Janiyat Yasu Vairagyam. They get knowledge and they get renunciation by Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayojitaha. By surrendering to Krishna,
then they become so attached to Krishna that they automatically give up this world. तो भगवान के चरणों का आश्रय लेने से और उनसे आसक्त हो जाने से भौतिक संसार की आसक्ति को आसानी से त्याग कर सकते हैं. And by being so attached to Krishna, they want to follow all of his indications and instructions. और भगवान से आसक्त होने के कारण वो भगवान के हर प्रकार के निर्देश और आज्ञा का पालन आसानी से कर पाते हैं. One time Srila Prabhupada, wherever Srila Prabhupada would go, many devotees would go there, and especially the Sankirtan devotees. और श्रील प्रभुपाद जहाँ भी आते थे वहाँ कई भक्त इकट्ठा हो जाते थे, विशेष करके संकीर्तन पाठ के जो भक्त हैं वहाँ पर आ जाते थे. So Srila Prabhupada was in Washington D.C. and all the Sankirtan devotees came, and they wanted to do Sankirtan for Srila Prabhupada's pleasure. और प्रभुपाद वाशिंगटन डीसी में थे और वहाँ पर बहुत सारे संकीर्तन के भक्त आए और वो प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए संकीर्तन करना चाहते थे. But every day it was raining. और हर रोज वर्षा होती थी. So the devotees came to Prabhupada and said, Srila Prabhupada, we want to go out and do Sankirtan to please you. Why is Indra giving this rain? तो भक्त जाकर प्रभुपाद को बोलने लगे कि हम जाकर बाहर जाकर कीर्तन करना चाहते हैं, तो इंद्र क्यों वर्षा कर रहा है? And Prabhupada said, because Sankirtan Yajna is so elevated that Indra is afraid that you may take his position. तो संकीर्तन इतना शक्तिशाली है कि इंद्र को भय लगता है कि आप संकीर्तन के द्वारा उनका स्थान ग्रहण न कर लें. So devotees understood. तो भक्त है सब समझ गए. So this is the determination that we should have. तो इस प्रकार का हमारा दृढ़ मनोबल होना चाहिए. And speaking of rain, in the 4th verse of this chapter, it speaks about how the clouds are dumping so much water on the ground. तो इसी अध्याय के 14 श्लोक में बताया गया है कि जो बादल हैं बहुत सारी वर्षा प्रदान कर रहे हैं. Agitated by the wind and the lightning. और क्योंकि वर्षा है वो बिजली और हवा के कारण है, बादल है, विचलित होते हैं. Vishwanath Chakravarti Thakur said, the lightning is like the mode of goodness. तो जो बिजली है वो सत्वगुण की भांति है. And the rain is like the mode of passion. और जो वर्षा है वो रजोगुण है. And the clouds are like the mode of ignorance. और जो बादल है घने काले बादल वो तमोगुण की भांति. So they're covering the sun and the moon just like the 3 modes of nature cover the pure soul. तो ये तीनों मिलकर है सूर्य और चंद्र को आवृत कर देते हैं जैसे कि तीन गुण है जीव को आवृत करते हैं. But the rains also remind us of how even though someone may have so many responsibilities, if they are very merciful, then they can give bhakti to others, like the Sankirtan devotees, like all the devotees distributing prasadam, the devotees worshipping the deities, everyone sees their beauty. तो आप बादल से और वर्षा से समझ सकते हैं कि अगर आप उदार हैं तो जैसे बादल है वर्षा देते हैं उसी प्रकार से भक्त है प्रचार करके जैसे संकीर्तन या भगवान का श्रृंगार करके पुस्तकों का वितरण या प्रसाद का वितरण करके सबके ऊपर कृपा प्रदान कर सकते हैं. And especially Tranaya Karuna Gana Ganatvam. Just like the rain cloud, the spiritual master is distributing Krishna's mercy to the devotees. जैसे गुरु महाराज हैं तो उसका कृपा का बादल है वो सबके ऊपर कृपा कर रहा है. When Chaitanya Mahaprabhu was very small baby, they gave him the name Vishvambar. तो जब चैतन्य महाप्रभु छोटे बालक थे तो उनको एक नाम दिया गया विश्वम्भर. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he explains that Vishvambar means just like the farmers are they're so happy when the rains come and their crops can grow. Vishvambar is distributing his mercy profusely to everyone and their bhakti can grow. तो श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर है विश्वम्भर नाम का अर्थ बताते हुए कहते हैं
कि जैसे वर्षा होती है और खेडूत बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि बहुत अच्छा फसल होता है, तो उसी प्रकार से विश्वम्भर है अपनी भक्ति के प्रचार के द्वारा सबके पर कृपा करके सबकी भक्ति को का वर्धन करते हैं. And those who chant the Gayatri mantra, they meditate on how Chaitanya Mahaprabhu had 3 phases of his life. तो इस प्रकार से जो गायत्री का जप करते हैं वो समझ सकते हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु 3 प्रकार से कृपा प्रदान करते हैं. In his Adi Leela, he was Nimai Pandit and he was giving knowledge. तो हम देखते हैं कि आदि लीला में वो निमाय पंडित थे और सबको ज्ञान प्रदान करते थे. And he would, especially even after he took sannyas, he was giving knowledge to Sarvabhauma Bhattacharya, Prakashananda Saraswati, to all these great scholars and making them devotees. और आप मध्य लीला में देख सकते हैं कि संन्यास के बाद उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य और बाद में प्रकाशानंद सरस्वती को भी ज्ञान प्रदान करके उनको भक्त बनाया. But in his Madhya Leela, he's Vishwambar and he is distributing mercy to everyone. मध्य लीला में आप देखते हैं कि वो विश्वम्भर थे और अपनी कृपा सबको प्रदान करते थे. And in his Antya Leela, he is Gauranga. He is absorbed in meditating on and speaking about and hearing about the pastimes of Radha and Krishna. और अंत में जो अंत्य लीला है तो उसमें वो गौरांगित के रूप में राधा और कृष्ण की गुह्य लीलाओं का चिंतन और ध्यान करते थे. And so, Sri Chaitanya Mahaprabhu. So these verses, previous to these 2 verses, are speaking about how, in spite of the effects of Kali Yuga, which are just like the clouds covering the sun, that a devotee will prosper. और इस श्लोक से पहले कुछ श्लोक थे जिसमें बताया गया था कि जो कलियुग का बादल है भले सूर्य और चंद्र को आवृत किया हुआ है फिर भी भक्त है उनकी भक्ति का वर्धन होगा. Now we see how Krishna and Balaram are going into the forest in the rainy season. और हम देख सकते हैं कि कृष्ण बलराम है वर्षा ऋतु में है वो वृंदावन में जाते हैं. And there are special features about the rainy season. और वर्षा ऋतु के कई लक्षण हैं. Waterfalls, the cows are so much green, beautiful green grass. Everything is very wonderful. तो पानी के झरने बहते हैं, हर जगह पर है हरियाली होती है, सब वस्तु बहुत सुंदर दिखाई देती हैं. But one Krishna's name in the previous chapter, Krishna is glorified, and Madhava means that he who it means springtime. So whenever Krishna enters into the forest, it becomes springtime. तो इससे पहले के ऋतु का वर्णन है तो जहाँ पर भी कृष्ण है वहाँ पर शरद And even during the rainy season, when he goes into the forest, it's like springtime. और जब हम देखते हैं कि वो वर्षा ऋतु में भी वन में जाते हैं तो भी वसंत जैसा ही माहौल बन जाता है. Even in the dry season, when he goes into the forest, it becomes springtime. तो जब भी वो वन में जाते हैं तब वहाँ पर वसंत ऋतु जैसा ही वातावरण बन जाता है. And Madhava also means the husband of the goddess of fortune. So whoever worships and glorifies Madhava gets the blessings of the goddess of fortune. माधव का एक अर्थ ये भी है कि वो भाग्य की देवी लक्ष्मी के पति हैं और जो भी भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं उनको भी भाग्य की देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है. Just like King Nimi, he described the greatest treasure in life. जैसे निमि राजा है वो जीवन का सबसे मूल्यवान जो खजाना है उसका वर्णन करते हैं. Satsanga Shripadir Ninam. The greatest treasure is the association of the devotees. और निमि महाराज कहते हैं कि भक्तों का संग ही जीवन का सबसे मूल्यवान भेंट है. Because they distribute love of Krishna. क्योंकि भगवान के भक्त है कृष्ण प्रेम का वितरण करते हैं. And Madhava also means that Madhu, like the honeybee, enjoying the sweetness of the flowers.
और जैसे माधव का एक और मतलब ले सकते हैं कि जैसे मधुमक्खी है वो फूलों की रस को पान करते हैं। So Krishna is enjoying the sweetness of the love of his devotees. तो भगवान है अपने भक्तों का जो मधुरता है भक्ति का उसका पान करते हैं। So when he enters the forest with Balaram, the trees, they bow down to Krishna. तो भगवान कृष्ण जब बलराम जी के साथ वन में प्रवेश करते हैं तब सब वृक्ष हैं झुक जाते हैं। Of course, externally speaking, they're full of fruits, and therefore the branches are bent downward. तो बाहर रूप से देख सकते हैं कि हम वृक्ष है जब फल से लदे होते हैं तब उनकी जो शाखाएं हैं वो नीचे झुक जाती हैं। But in Vrindavan, it's because they're offering their fruits to Krishna's lotus feet. तो वृंदावन में वृक्ष है क्योंकि भगवान को अपने फल प्रदान करना चाहते हैं इसलिए उनकी शाखाएं झुक जाती हैं। And even though Krishna understands this, he starts to speak to Balaram, and he says, just see how these trees, seeing you as the Supreme Personality of Godhead, are offering their obeisances. और भगवान कृष्ण हालांकि वृक्ष का भाव जानते हैं फिर भी वो बलराम जी की स्तुति करने लगते हैं। कैसे वृक्ष है वो जानते हैं कि बलराम जी है भगवान परम पुरुषोत्तम है और वृक्ष अपने फल उनको प्रदान करना चाहते हैं। Even though they're bowing down to Krishna, Krishna doesn't take the credit. और वृक्ष है भगवान कृष्ण के चरणों में झुक जाते हैं फिर भी कृष्ण है उसका प्रतिष्ठा नहीं देते हैं। He wants to give the credit to his devotee. तो वो अपने भक्तों को ही वो प्रतिष्ठा देना चाहते हैं। Because Balaram considers himself a devotee of Krishna. क्योंकि बलराम जी भी अपने आप को भगवान कृष्ण का भक्त ही समझते हैं। Even though he's his brother and he has all the same potencies, और वो कृष्ण के भाई है और उनमें कृष्ण जैसी ही सब शक्तियाँ हैं। he still considers himself Krishna's servant. फिर भी वो कृष्ण को फिर भी वो अपने आप को कृष्ण का सेवक ही समझते हैं। So Krishna, he wanted to give the credit to Arjuna, he wanted to give the credit to Yudhishthir. तो भगवान जैसे कि अर्जुन को या युधिष्ठिर महाराज को प्रतिष्ठा देना चाहते थे। He wanted to give the credit of preaching to the Pandavas when they were lamenting over this great war. So many people had died. He gives the credit to Bhishma Dev. और जब पांडव है दुखी हो गए कि युद्ध हुआ इतना सारे लोग मारे गए तब भगवान ने है वो भीष्म देव को क्रेडिट दिया। And even though Chaitanya Mahaprabhu, Krishna Prema Pradayate, is giving love of Godhead to everyone, तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो भगवत प्रेम का सबको वितरण करते हैं। he gives the credit to Rupa and Sanatana Goswami. वो उसका जो लाभ या उसका श्रेय जो है वो रूप और सनातन को देते हैं। And even though he brought the holy name, he gives the credit to Namacharya Haridas Thakur. और हालांकि चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम का प्रचार किया फिर भी उसका श्रेय उन्हें हरिदास ठाकुर को दिया। And even though he is Unato Chwalam Rasa Sabhakti Shriyam, he has brought the great treasure of the brilliant rasa of Madhurya. He gives the credit to Ramananda Roy. उन्होंने तो उन्नत रस जो है माधुर्य रस उसको प्रकट किया फिर भी उसका श्रेय वो रामचंद्र राय को देते हैं। So this is the magnanimous nature of Krishna. तो यही तो भगवान कृष्ण का सबसे औदार्य भाव है। When we are conditioned, we want to take the credit. No. पर हम जब बद्ध होते हैं तो हम सब श्रेय अपने आप लेना चाहते हैं। And when something goes wrong, we want to blame someone else. और जब कुछ गड़बड़ होती तो दूसरों को उसके लिए जवाबदार ठहराते हैं। And therefore Chaitanya Mahaprabhu instructs us, amanina manadena. No? और इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमें उपदेश देते हैं कि हमें दूसरों को मान देना चाहिए, स्वयं मान के आशा नहीं करनी चाहिए। Don't take any credit for yourself. अपने लिए श्रेय मत दो। Glorify the Vaishnavas, glorify the Supreme Personality of Godhead. भक्तों की स्तुति करो, भगवान की स्तुति करो। Even the living entities, no, Srila Bhaktivinoda Thakur said, the fourth kind of offenses is jiva aparad. No? तो भक्तिविनोद ठाकुर एक बात बताते हैं कि चौथा एक अपराध है, चौथे प्रकार का एक अपराध है, वो जीवों के प्रति अपराध। Because a devotee sees all the jivas as very elevated because
they have attracted Paramatma to their hearts. तो क्योंकि जो उन्नत भक्त है उसने परमात्मा को अपनी ओर आकर्षित किया होता है, तो योगी उच्च स्थिति को भी वो देख सकते हैं. So, and therefore, Prabodhananda Saraswati, he says, Vishvam Purna Sukhayate. I only see perfection in this universe. तो प्रभुदान सरस्वती प्रार्थना करते हैं कि ये तो स्थिरता की पूरा संसार है, पूर्ण है. And we can, theoretically, we can also see that perfection. और हम देख सकते हैं कि पूरे संसार में पूर्णता है. But as representatives of Srila Prabhupada and Chaitanya Mahaprabhu, we have to see the imperfection. पर श्रील प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु के प्रतिनिधि के रूप में हमें संसार में पूर्णता है उसको देखना चाहिए. And sometimes Srila Prabhupada would preach these rascals, these nonsense people. हम देखते हैं कि प्रभुपाद है बदमाश लोगों को, दुष्ट लोगों को प्रचार करते थे. But we should not think these rascals and nonsense people. पर हमें ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि लोग बदमाश हैं. Prabhupada was just telling the truth about them, no, प्रभुपाद तो एक सत्य है वो बता रहे थे, so that we would not be attracted to their activities. ताकि हम ऐसे भौतिक कार्यों के प्रति आकर्षित न हों. Because Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, when he explains about the Prakrita Bhaktas, he says that they are still very attracted by the material activities of the successful people of this world. तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर बता रहे हैं कि जो प्राकृत भक्त हैं वो भौतिक वाले लोगों के कार्यों के प्रति अत्यंत आकर्षित होता है. And therefore, therefore, it's the duty of the acharya to point out their defects. और इसलिए एक जो आचार्य होता है उनका कर्तव्य होता है कि वो इस संसार में कितनी त्रुटियां हैं उसको दिखाए. But we should not dwell on their defects. और पर हमारा इनका काम नहीं है कि हम उस त्रुटियों के पीछे जाएं. We should think, here is a pure jiva soul just waiting for Krishna's mercy. हमें विचार करना है कि एक जीव भगवान का ही अंश है और भगवान की कृपा का प्रतीक्षा कर रहा है. And I have been given the privilege to take that mercy in the form of transcendental literature, Krishna Prasadam, and the holy name. तो मुझे विशेष अधिकार प्राप्त हुआ है कि मैं प्रसादम, भगवान का नाम और शास्त्र की कृपा उसको दे सकूं. I have no qualification. मेरी कोई योग्यता नहीं है. But Krishna is so merciful that he's giving me this opportunity so that I can become qualified. तो भगवान इतने कृपालु कि मुझे अवसर प्रदान कर रहे हैं जिससे मैं योग्य बनूं. And in this way we can actually do Sankirtan. और इसी प्रकार से हम संकीर्तन कर सकते हैं. And also just the internal Sankirtan, we can glorify Krishna properly. और इसी प्रकार से जब हम कीर्तन करेंगे तब हम भगवान के गुण, I'm so good at this, I'm so capable. अगर हम अपने ही स्तुति करते रहेंगे मेरे पास अच्छी बुद्धि है, मेरे पास बहुत सारे कौशल्य है, then there'll be no time for glorifying Krishna. तो अगर अपनी ही स्तुति करते रहेंगे तो हमारे पास भगवान की स्तुति करने के लिए समय नहीं होगा. And I will conclude with what Srila Prabhupada said. He was quoting Prabodhananda Saraswati Thakur. He said that how to do Sankirtan. और प्रबोधन सरस्वती को उद्धृत करते हुए बताते हैं कि कैसे हमें संकीर्तन करना चाहिए. He said that, this is Prabodhananda, he's saying, when you see a materialistic person, you put a straw in your mouth. तो तब वो कहते हैं कि आप एक भौतिक वाले व्यक्ति को मिले तब अपने मुख में कांच का तिनका रख जाइए. And you go up to them and you offer dandavat. और ऐसे भौतिक वाले व्यक्ति को प्रणाम करो. And then you get up and you say, you are the most intelligent, capable person. और उनकी स्तुति करो कि आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बहुत सक्षम हैं. You are so qualified in all ways. और आप बहुत योग्य हैं हर प्रकार से. No one can compare to you. आपकी तुलना में और कोई है ही नहीं. Actually, when you say no one can compare to you, it means no one is as miserable as you. No. तो वो कहते हैं कि आपकी तुलना में कोई है ही नहीं, तो उसका मतलब है कि उनके जितना तो आप दुखी है ही नहीं. And then, of course, the person hearing all this, he says, oh, go on, you can
What? Please keep speaking. No. तो जब व्यक्ति ऐसे अपनी सुधी सुनता है तो कहेगा कि हाँ ठीक बोलते रहो। And you say, I just have one request. तो मेरी एक ही प्रार्थना है, Anything you want. आप जो चाहते हो मिल जाएगा। Just forget all of this and surrender to the lotus feet of Sri Chaitanya तो Mahaprabhu. आप सब कुछ भूल जाओ और चैतन्य महाप्रभु के चरणों का आश्रय ले लें। So this is what we do. We approach people, we're very friendly, we give them a book, and that book will bring them to the lotus feet of Chaitanya तो Mahaprabhu. यही हम करते हैं कि हम लोगों को है पुस्तक देते हैं और ये पुस्तक है उनको भगवान के चरणों में लाता है। Or we give them prasadam, we give them the holy name. हम उनको प्रसाद देते हैं, उनको हरि नाम देते हैं। But the book is more potent. पर जो पुस्तक है वो सबसे महत्वपूर्ण है। Because at that moment, when they hear the holy name, maybe they're trying to enjoy life and they won't take it seriously. जब वो हरि नाम लेते हैं तो हो सकता है कि वो भौतिक संसार का भी वो मन में विचार करते हैं। Or they take some prasadam and they think, oh, this is just a nice sweet or a nice samosa. तो प्रसाद खाते तो उनको यही मन में भाव होता है कि ये तो बहुत मीठा कुछ खाना है। So they get some agyata sukriti. तो उनको कुछ अज्ञात सुकृति तो प्राप्त होती है। But when you give them a book, that book will patiently await until they are ready, and he will, in Krishna in his literary form, will give them his mercy at that precise moment when they actually can receive it. जब पुस्तक हम देते हैं तो जब अवसर आता है तब भगवान की कृपा प्रकट हो जाती है। And therefore we should all of us, we should always have some of Prabhupada's books with us. And इसलिए हमारे पास हमेशा श्रील प्रभुपाद की कुछ पुस्तकें होनी चाहिए। Chaitanya Mahaprabhu said, Jari dehek tari kaha Krishna padesh amara gyaya guru hanyate tare desh. That everyone you meet and anywhere you go, you should speak about Krishna. तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप जहाँ पर भी जाते हैं, जहाँ पर भी होते हैं, आपको हमेशा कृष्ण का उपदेश बोलना चाहिए। We can't always just engage in a conversation about Krishna. हमेशा हम कृष्ण के बारे में बात कर सकते हैं लोगों से। But you can give them a book. कई बार हम ऐसी बात नहीं कर सकते, तब हम उनको पुस्तक दे सकते हैं। What is your preaching compared to Prabhupada's preaching? आपका प्रचार प्रभुपाद के प्रचार की कोई तुलना नहीं हो सकती। So they have that book, and at some point that book will open their hearts and Krishna consciousness will flow in. तो जब उनके पास पुस्तक होगी तो कोई एक अवसर आएगा कि जब वो पुस्तक उनके हृदय में प्रवेश करेगी और उनको कृष्ण कृपा प्राप्त होगी। And just as it says here, they will come running very quickly to Krishna's call. और इस प्रकार से यहाँ जैसे गाय दौड़कर कृष्ण के पास आ रही है, उसी प्रकार से वो कृष्ण के पास दौड़े जाएंगे, दौड़कर जाएंगे। Just like the cow is coming to Krishna. इस प्रकार से गाय यहाँ पर दौड़ रही। In the Bhagavatam it says that the cows, it says, Janesh Bhavikyeshu Swa Gokara, that if you don't take advantage of the association of the devotees, your mentality is just like that of an ass and a cow. अगर आप तो के संग का लाभ नहीं है तो हमारा जो जीवन है वो गाय या गधे के समान ही है। But even a cow or even an ass, like Denakasura, he got Krishna's mercy. पर हम देख सकते हैं कि गधा जैसे धेनुकासुर को भी भगवान की कृपा प्राप्त हुई। A cow takes Krishna's mercy. और गाय जो है वो भगवान की कृपा प्राप्त करती है। An ass, he had to beat that mercy into Denakasura. तो जो गधा है उसको तो कृपा प्राप्त करने के लिए थोड़ा उसको मार सहन करनी पड़ती है। But when he gave up his body by getting Krishna and Balaram's mercy, he was liberated. जब वो मर गया तो भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करके उसको मुक्ति मिली। So we don't want to see the living entities beaten by material nature so that finally hopefully they will surrender to Krishna. तो हम नहीं देखना चाहते कि वो भौतिक संसार में जो जीव है वो माया के द्वारा उनको दुख दिया जाए, बार-बार उनको पीटा जाए और तब वो भगवान की शरण में जाए। Kripabdivir Paratukha Dukhi. A devotee, when they see someone suffering, they want to give them Krishna's mercy. तो जब भक्त लोगों को दुखी दिखता है तब वो कृष्ण की कृपा उनको देना चाहता है। So this is our duty to Srila Prabhupada, to Sri Chaitanya Mahaprabhu, to the Vaishnavas. तो यही हमारा कर्तव्य है श्री प्रभुपाद के प्रति, चैतन्य महाप्रभु के प्रति और भक्तों के प्रति। Taking this mercy and giving it to everyone. तो
तो हम कृपा प्राप्त करें और दूसरों को कृपा प्रदान करें। So these are some thoughts on this verse. I'll stop here. ये कुछ विचार थे, यहाँ पर विराम करते हैं। आपके कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं हिंदी या इंग्लिश में। Anyone have a comment or question? प्रश्न या टिप्पणी हो तो बोल सकते हैं। Krishna. बड़ा महाराज, मेरा प्रश्न था कि शास्त्र में बताया गया है कि देवता भी बनते हैं भगवान के, लेकिन जब पृथ्वी लोक पे जब कोई तपस्या करता है तो उनको विघ्न डालते हैं वो, तो क्या उनको तो ये पता है उनको? The demigods are the devotees of Krishna, and they put obstacle when some devotee is performing austerity. So thus demigod get some repercussions. Like Indra is putting obstacle, so do Indra get some repercussion? Yeah, it depends on the type of austerity. तो ये निर्भर है कि किस प्रकार की तपस्या वो कर रहा है। If it is austerity for personal benefit, the demigods won't be so concerned. तो अगर वो अपना भौतिक लाभ के लिए तपस्या कर रहा है और देवता उसको अवरोध डाल रहे हैं तो उससे देवताओं को जो है प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। But the austerity, because in Kali Yuga we can't do such great austerities. कलयुग में तो ऐसे कठिन काम करना संभव नहीं है। Maybe the Nag Babas, they can no clothes in freezing cold weather. तो कुछ नागा बाबा है कि जो कपड़े नहीं पहनते हैं और ठंडी में बैठे रहते हैं। No, but that doesn't worry the demigods so much. No. पर देवताओं को उसकी ज़्यादा चिंता नहीं है। But the devotees are willing to do anything for Krishna's pleasure. पर जो भक्त है वो भगवान की संतुष्टि के लिए कुछ भी करना चाहते हैं। And they're very concerned about that. और देवताओं को उसकी चिंता होती है। Because they know what all these ordinary living entities, or the jnanis and the yogis, they know about their austerity. तो देवता है वो जो कर्मी है, ज्ञानी है, योगी है, उनकी तपस्या के बारे में तो जानते हैं। They can deal with that because they will give them benefits. तो उनके साथ व्यवहार करना उनके लिए बहुत आसान हो जाता है, उनको कुछ लाभ प्रदान कर देते हैं। Because as Krishna says in Bhagavad Gita, Dashyante Jaga Bhavitai, that they are obliged to give it. They have to give benefits. तो भगवद गीता में जैसे भगवान कहते हैं कि देवताओं को वरदान देना ही पड़ेगा। But Krishna doesn't have to give anything. भगवान कृष्ण इस प्रकार से बाध्य नहीं है। He wants to give. वो देना चाहते हैं। He wants to give blessings to all the living entities in the form of Chaitanya Mahaprabhu. और वो सभी जीवों को अपनी कृपा चैतन्य महाप्रभु के रूप में देना चाहते हैं। He wants to give his mercy to someone who is performing devotional service. तो वो अपनी कृपा देना चाहते हैं उन भक्तों को जो भक्ति में लगे हैं। When a devotee, ye bhajante chamam bhaktya, when a devotee is doing bhajan, करता है तो भगवान की कृपा को आकर्षित करता है। Maitateshu chapyaham, and then Krishna reciprocates with the devotee mutually. और कृष्ण है भक्त के साथ आदान प्रदान करते हैं। So this kind of austerity, which comes from devotional service, that is very powerful. तो जो तपस्या है भक्ति से उत्पन्न है वो बहुत ही शक्तिशाली है। Because the devotee is willing to do anything for Krishna. तो भक्त है वो भगवान के लिए कुछ भी करना चाहते हैं। And the more difficult the obstacle, the more determination that the devotee has. और जितने और बड़े होते हैं उतना ही भक्तों का मनोबल दृढ़ बन जाता है। And therefore the demigods say, oh, these are dangerous people. तो इसलिए देवताओं को चिंता होती है कि ये तो बहुत खतरनाक है। But anyway, we do what Krishna wants us to do. तो चिंता मत करो, हम तो जो कृष्ण चाहते हैं वही करना चाहते हैं। Doesn't matter. We don't worry about the obstacles that may come. हम अवरोधों की चिंता नहीं करते हैं जो आने वाले हैं। Because, as I mentioned yesterday, Atmakrita, we know that whatever obstacle is there, it is just a result of my previous improper activities. तो एक भक्त हमेशा यही चिंतन करता है कि आत्मामृत यानी कि मेरे जीवन में अगर कोई अवरोध आ रहा है तो मेरे पूर्व के कर्मों के कारण ही आ रहा है। So, we're not so concerned. तो इसलिए भक्तों को उसकी ज़्यादा चिंता नहीं है। He is concerned about the demigods. Yeah. He is saying
if the demigods are putting obstacles in devotees' progress, then what happens to those demigods who are putting the obstacles? They, that's their nature. देवता और करते हैं वो तो उनके उनका स्वभाव है Krishna allows this to happen, और भगवान को चाहते हैं so that his devotees can become. Krishna has so many ways that he brings the devotees closer to his lotus feet. तो भगवान के पास कई योजनाएं हैं जिससे भक्त है उनके चरणों का आश्रय ले And especially problems like sickness and diseases and bodily discomfort, that those things are manifested by our past activities, and we're happy to suffer those obstacles to get rid of these residues of karma. तो कई प्रकार की बीमारियां या शरीर में कुछ कमजोरियां ऐसी कई वस्तुएं होती हैं तो भक्त है उसको खुशी से स्वीकार करता है क्योंकि वो जानता है कि इससे मेरे कर्म कट रहे हैं Just like if I break my arm, I think, oh, I got rid of a big obstacle. No. तो अगर मेरा हाथ टूट जाता है तो मुझे विचार करना चाहिए कि कोई एक अवरोध था वो चला गया Because Srila Prabhupada explained that whatever is happening to us, that is just a small particle of what we actually deserve. तो भक्त के साथ कुछ भी अनहोनी होती है तो समझना चाहिए कि कुछ बड़ी अनहोनी होनी थी उसकी जगह पर छोटे काम से छोटे अनहोनी से वो काम हो गया So if I break my arm or my leg, what did I do? No, if that's just a small particle of reaction. तो कुछ हाथ या पैर टूट जाते तो प्रतिक्रिया का एक छोटा सा अंश है Maybe I was Stalin or Hitler in my last life. No. हो सकता है कि मैं पूर्व जीवन में स्टालिन या हिटलर था So no, we don't know, or who knows? So many heavy people that have done so many things. No, of course we know we were not Hiranyakashipu because he was a devotee. No. तो हम जानते हैं कि तो पहले कुछ भी रहे होंगे पर हिरण्यकश्यप नहीं थे क्योंकि वो एक भक्त था No. Maybe I was Colonel Sander, Kentucky Fried Chicken. No, now I just get a broken arm. No. तो हो सकता है कि हमने पहले जीवन में कुछ पत्र जैसे चिकन या मुर्गी या उसको मतलब भूनकर खा लिया हो और उसका कुछ प्रतिक्रिया हमें मिली हो Just imagine the karma of these people who have these chains of restaurants who are serving unmentionable things. तो आप उन लोगों के जो कर्मों का फल का सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं कि वो दिन भर है ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट चलाते हैं कि जहाँ पर वो पशु पक्षी को मार कर भूनकर लोगों को देते हैं Or producing liquor and thousands or millions of people are becoming intoxicated and forgetting. वो शराब का उत्पादन करते हैं जिससे लाखों करोड़ों लोग हैं नशे में रहते हैं Even Hitler, compared to them, looks saintly. No. तो इस प्रकार से आज के जो कलयुग में इस प्रकार से पाप चल रहा है तो उसकी तुलना में तो हिटलर को आपको साधु मानना चाहिए At least he was vegetarian. No. कम से कम वो So anyway, we just accept Krishna's mercy. हम सिर्फ कृष्ण को स्वीकार करते हैं So anyway, now it's a little past the time. We'll stop here. Thank you all very much for your kind attention. Srila Prabhupada ki jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Hitai Gaur Premanandi. इसको महाराज की ओर से हम पूज्य प्रसाद महाराज के बहुत ही आभारी हैं कि वापस बड़ौदा में आए और सब भक्तों को उनके संग